Assalamu alaikum, dear students. I'm Muhammad Riyaz Khan with the fourth and last series discussion on the developing through the lifespan. आज के सेशन में we are going to discuss the adolescence and the adulthood कि उस दौरान cognitive और social और psychological and physical development कैसे होती है. So we start from the adolescence और adolescence में physical developments में. Okay, adolescence, which is usually seen the ages from 13 to 20s, although it is now shrinking because the adulthood is now more and the adolescence age is a little bit reduced due to so many reasons. लेकिन हम फिर भी adolescence को एक key age stage समझते हैं. That is, adolescence is the transition from puberty to the social independence. जब एडल्टहुड पे बंदा जब पबर्टी पे आता है, बलूगत तक पहुंच जाता है और वहां पे फिर वो अपने आप को सोशली इंडिपेंडेंट बनाने की जस्तजू में लग जाता है. सो दैट एरा इज कॉल्ड द एडोलेसेंस. उसमें अर्ली मैच्योरिंग वाय जो हैं, दे वांट टू बी मोर पॉपुलर, सेल्फ एश्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट. Or chunke they want to be independent, so they want to show that they are independent, so they may be at the greater risk for drug and alcohol use, delinquency and premature sexual activity. क्योंकि इस दौरान जो ट्रांजिशन हो रही होती है वो चाइल्डहुड से अब द मैच्योरिंग बॉय जो है वो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, क्योंकि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, उसकी बॉडी डेवलप हो चुकी होती है. ही इज नाउ अ फुल ह्यूमन बीइंग, फंक्शनल, फुली फंक्शनल ह्यूमन बीइंग. सो वो यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं कि वो ड्रग अब्यूज, डेलिकेंसी और प्री मैच्योर सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ जा सकते हैं, जस्ट टू शो दैट ही इज एबल टू डू सो. While on the other hand, early maturing girls, there may be a mismatch between physical and emotional maturity, which may encourage relationship with older teens. This is one of the concern thing. When the girls are in adolescent stage, they are physically but not emotionally. So this differential may lead these girls to have relationship, matching relationship or love relationship to the older teens. That is because of the security concern. क्योंकि जब जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल्स होती है, they want to be what we can say कि to secure their future. So that's why they have the tendency to have relationship with older teens. Older teens means which are 18, 19 age. Teasing or sexual harassment may occur because they are now fully grown, so they may be seen by others as something for their fulfillment of their sexual needs. Teens are in teen age, the frontal lobe development and synaptic pruning, what we have discussed previously as well, that elimination of extra synapses on what we call use it or lose it phenomena, lead us, pruning us may lead to irrational and risky behavior. Because जो frontal lobe है, जो कि memory के साथ या rational decision making के साथ concern है, if it is not used properly in this physical development age, सो उसके जो फ्रंटल लोब में जो फिर न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, वो यूज न होने की वजह से वी आर गोइंग टू लूज दैट. That is because if it is not used, it will be of no use. So जब हम उसे यूज नहीं करते तो उसकी यूटिलाइजेशन की वजह से उनके जो आपस में जो न्यूरल पल्स है वो नहीं जाती और उसकी वजह से जो है it become non-functional after some period of time. There are some 7 key things to know about a teenage brain. The very first thing in the brain reaches its biggest size in early adolescence. जब ये teen age पे आ जाता है, it's around 14 years, तो brain जो है, जैसे biological brain जिसे हम कहते हैं, जो physical existence रखता है, वो अपने physical existence के जो हाईएस्ट लेवल उस पर पहुंच जाता है. जो साइज है
उस साइज पे बिगर एनफ बन जाता है. And the second is the brain continues to mature even after it's done growing. Growing means in terms of physics, physical growth. That is what the number of neurons. ठीक है जी, number of neurons तो अब मजीद शायद इतने ना आ रहे हों. Physically इसका जो volume है, it's reached to the utmost level. लेकिन maturity is nothing to do with the physical growth. It is about the neural network functioning. कि इसके जो different parts हैं brain के, how they are interconnected. Now it is written that the brain may be done growing in size. It does not finish developing and maturing until the mid to late 20s. The frontal part of the brain, what we call prefrontal cortex, is one of the last brain regions to mature. This area is responsible for skill like planning, prioritizing, and controlling impulse. That's why with maturity, we are much more indulge in planning, prioritizing things, and then controlling our emotions and feelings. Because these skills are still developing, teens are more likely to engage in risky behavior. जो हमने बात की थी कि proning का जो concept है कि if they are not using these things, so then these neural networks or these neural places may be not converted to the fully functional area. So that's why they may have the risky behavior without considering the potential reason of their decisions. And the number 10, the teen brain is ready to learn and adapt. That is one of the, when we can plasticity of the teen brains, which means it can change, adapt, and respond to its environment. So this is the era, the teenage, 13 to 19, where the brain can be indulge in much more mental activities, mental exercises, creative exercises, and creative activities. So it may develop to a very well-functioning brain. The fourth is that many mental disorders may begin to appear during adolescence. Outgoing changes in the brain, along with physical, emotional, and social changes, can make teens vulnerable to mental health problems. All the big changes the brain is experiencing may explain why adolescence is a time when many mental disorders such as schizophrenia, anxiety, depression, bipolar disorder, manic disorder, and so eating disorder can emerge. Why is this so? Because this is the time when the brains reach to is the its volume, the highest volume level, but it start maturing now. So if there is some issues in the region of the brains and it not functioning fully, or there was some symptoms or causes for some disorder, so adolescence में वो सामने आना शुरू हो जाती है. Because now the brains is turning to be a mature one. So अगर वहाँ पे कोई issues हैं तो वो issue जो maturity के साथ cover नहीं हो पाते वो मजीद नुमाया हो जाते हैं, and the one can uh, experience it, the one can diagnose it, the one can see it that this disorder is now in front. और इसमें से एक और भी है because जो emotional maturity है वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये exhibit बड़े आसानी से हो जाते हैं ये सारे disorder. जो इसका victim होता है वो उसको बड़े आसानी से exhibit कर रहा होता है. And the fifth is the teen brains may be more vulnerable to stress. बिकॉज यहाँ पे एडोलेसेंस में जो टीन एज है वहाँ पे जो एडोलेसेंट बंदा है वो मोर प्रोन होता है इमोशंस को. और as this brain is still developing, teens may respond to stress differently than adults. क्योंकि maturity नहीं हुई प्रॉपर जो है उसको प्रोसेसिंग उसने नहीं की, उसने प्रायोरिटाइज नहीं किया, वो he cannot control the impulses still now. So it may be get into the stress. Mindfulness nahi aati, which is a psychological process of actively paying attention to the present moment, which may help teens cope with the reduced stress. But wo mindfulness aane mein, it is in late teen age, that is 16, 17, 18, 19. So wahan se pehle टीन में अगर बंदा है ही इज मोर प्रोन टू स्ट्रेस. और ये स्ट्रेस अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर इवन लेटर
लेट टीन्स में भी वो फिर टीनेज में भी ऐसे ही होता है. And the teens need more sleep than the children and adults. What issues के जो मेलाटोनिन होता है जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, its level in the blood are naturally higher than at night and drop later in the morning in teens than in most children and adults. अब यहाँ पे जो टीन एजर के लोग होते हैं, अगर वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे होते हैं तो वो उनके लिए फिर इश्यूज बन जाते हैं स्लीप डेट के और इंसोम्निया के भी, स्लीप डिसऑर्डर के भी. जितने भी स्लीप डिसऑर्डर हैं वो टीन एज में, चूंकि हमें वी नीड 8 to 10 hours स्लीप अ नाइट, लेकिन जो टीन एज है वो हासिल नहीं कर सकते इतनी नींद यूजुअली ड्यू टू डिफरेंट रीजंस एंड स्पेसिफिकली टू द आईसीटी गैजेट्स नाउअडेज. A lack of sleep can make it difficult to pay attention, may increase impulsivity, and it again impulsive भी बना देती हैं उनको, स्लीप डेट भी उन पे चढ़ जाता है और so on. So उनकी जो psychological well-being है, it is affected. And the last thing is the teen brain is resilient. That is one of the good things, that it is vulnerable to the adolescence is a vulnerable time for the brain and for the teenager in general. Most teens go on to become healthy adults. Some change in the brain during this important phase of development actually may help protect against long-term mental disorder. तब वी हैव डिस्कस कि जी मेंटल डिसऑर्डर जो है वो इस टीन एज में महसूस होना शुरू हो जाते हैं, एग्जिबिट होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन जो टीन एज है, इट इज रिजिलियंट, इट इज अडेप्टेबल, इट इज वेरी मच गुड टू कोप विद द चेंजेस. सो इन सच केस अगर प्रॉपरली मैनेज कर सके जो उसके फिजिकल हेल्थ है, जो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, सो दिस ब्रेन कैन शो रिजिलियंस and it may may have protection against the long-term mental disorders. So, but for that, the physical health and the psychological health is of immense importance. जी, cognitive development क्या होती है? What we used to say, adolescents may think that their private experiences are unique because they are now getting their brain developed, as we have seen in the earlier slides. अब वहां पे इनको लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है, इट्स यूनिक, इट मे नॉट हैपन टू एनीवन एल्स बिकॉज मैच्योरिटी अभी आई नहीं होती. सो दैट्स व्हाई दे एक्सप्रेस इन देयर वे. फॉर एग्जांपल दे से, बट यू मॉम डोंट रियली नो व्हाट हाउ इट फील्स टू बी इन लव. अब उन्हें नहीं पता कि be in love, to fall in love is a general phenomenon which is usually happen to most of us. लेकिन वो अपने जो experiences हैं, personal and private experiences हैं, वो इस तरह display कर रहा होता है जैसे जो mom है या जो और जो उनके adult है, around adulthood के लोग हैं, उन्होंने शायद ये नहीं किया. And they are capable of thinking of their own, and that's how here the abstract thinking and abstract reasoning is started. सो जॉन पैशेट की थ्योरी के मुताबिक वो कहता है कि यहाँ पे रीजनिंग पावर जो है वो डेवलप होती है. फॉर्मल ऑपरेशनल पावर जो है, जो टीन एज का जो है कि वो चीज़ों को कनेक्ट करना सीख देते हैं. फैकल्टी ऑफ रीजनिंग जो है वो लॉजिकल कनेक्शंस बनाना शुरू कर देती है कि हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, सी, डी, ई, एम. सो इवेंट्स, human beings are जो phenomena है, concepts है, how are these interconnected to one another. So this development is happened in adolescence age. They may think about what is ideally possible and compare that with the imperfect reality of their society, their parents, and themselves. Because they start thinking about comparing and connecting things, so they may not be good at that. So that come with their imperfect reality. That is what we can say कि जो asymmetry of information है, क्योंकि एक adolescence के पास अब इतने जो जराए नहीं होते कि वो प्रॉपर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए, और बम्बारमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है. सो उसमें से जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट गिवन टू देम. सो दैट्स व्हाई दे मे हैव दिस इशू and they may debate human nature, good and well. So यहाँ पे वो जो moral
डिस्कशंस है वो शुरू हो जाती है. एडोलेसेंस try to indulge in those discussions, what we call moral judgment, जिस पे हमारे आगे की डिस्कशन है. मोरल रीजन बजट और कोलबर आगे से कंटिन्यू करेंगे. टू बी अ मोरल पर्सन इज टू थिंक मोरली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. मोरल पर्सन हम किसे कहते हैं? जो कि मॉरली सोच सकता हो और उसके अकॉर्डिंगली बात भी कर सकता हो. मोरल रीजनिंग गाइड मोरल एक्शंस. एंड सो जो मोरल रीजनिंग है, अगर इफ इट इज डेवलप्ड, जो moral development है वो प्रॉपर हो जाएगी, then the adolescent will be having the moral actions. And according to the new research, this is one of the greatest finding of psychology, that much of our functioning occur not on the high road of the deliberate conscious thinking, but on the lower road, unconscious and automatic. Referring back to the dual take mind डिस्कशन, जिसमें हम एक कॉन्शियसली चीज को सोच रहे होते हैं और एक अनकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं. सो यहाँ पे जो मोस्टली फंक्शनिंग हो रही होती है वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रही होती है, नॉट ऑन द कॉन्शियस लेवल. सो मोरल इंट्यूशन होते हैं, गट फीलिंग्स आती हैं बंदे में, स्टार्ट हो जाती हैं, एंड इट्स अफेक्टिवली लेडन इंट्यूशन होती है. अफेक्टिवली मीन्स जो फीलिंग से हो. गट फीलिंग्स तब आती है व्हेन वी हर्ट समवन, हमने किसी को हार्म किया. सो वो गट फीलिंग्स इसलिए आती है कि फीलिंग अटैच्ड होती हैं, और इसी से हमारे मोरल एक्शंस होते हैं. मोरल एक्शन फीड्स मोरल एटीट्यूड्स, और वही मोरल एक्शन जो हमने लिए होते हैं, बिकॉज वी थिंक मॉरली, we have moral reasoning, and then we have the gut feelings. Now in reaction to that, we will be having moral actions. अब moral actions जो है वो फिर moral attitudes में develop हो जाते हैं, convert हो जाते हैं. This is Kohlberg theory about the moral thinking and moral development. There are 3 levels and 6 stages. In level 1, what we call pre-conventional level, no internalization. So stage 1 में, level 1 के stage 1 में heteronomous morality होती है. जो kids होते हैं, they obey 0 to 6, up to 6 year की जो age होते हैं, they obey just because the fear of punishment. डराया धमकाया जाता है, तो उसकी वजह से वो होता है. सेकेंड स्टेज में इंडिविजुअलिज्म, पर्पस एंड एक्सचेंज होता है. If they are given some food, or what we used to say in Jean Piaget theory, self-centrism या egocentrism है, उसकी वजह से वो उसकी morality होती है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है. That is because of me. जबकि पहले स्टेज में morality is all about the punishment, कि जो पेरेंट्स हैं, जो प्राइमरी केयर गिवर है, वो किस तरह पनेटिव अप्रोच रखते हैं, दे आर पनिशिंग आर नॉट. सो उसकी वजह से वो जो टर्म्स होती हैं मोरालिटी की, वो सीखते हैं. बट this morality is not internalized, it is not inculcated, means it not become part of the one persona. The level 2 comes where the intermediate internalizations take place of morality. Morality हमारे inner का हिस्सा बन जाते हैं 7 to 11 years. Stage 3 में multi interpersonal expectation, relationship and interpersonal conformity होती है, और यहाँ पे हम ट्रस्ट, केयरिंग और लॉयल्टी की बात करते हैं, और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं to do things the trust based and care based and loyalty based. So यहाँ से जो morality के concepts आते हैं वो mutual interpersonal expectations पे है कि I'm doing that so the other people shall be doing that. The norm of reciprocity, या जिसे हम social exchange theory भी कहते हैं कि I am doing good to the others so others shall do good to me as well. Stage 4 में जब मजीद सोशल सिस्टम्स में आते हैं हम, और वहाँ पे हमारी मोरालिटी मजीद डेवलप होती है. सो हियर मोरल जजमेंट आर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल ऑर्डर, लॉ, जस्टिस एंड ड्यूटी. अब लेवल 2 के स्टेज 3 में जो है वो, उसमें तो ये था कि इफ आई एम डूइंग गुड टू अदर्स सो अदर्स शुड do good to me.
जबकि स्टेज 4 में फिर आके थिंकिंग ये हो जाती है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस एज आवर सोसाइटी इज asking for it, my religion is requiring this, my uh, value system is needs this to be done. So morality का यहाँ का जो reactions हैं, यहाँ पे जो actions है, thinking है मोरालिटी के हवाले से, वो अब लेवल 1 की तरह सेल्फ सेंटर नहीं रहती, लेवल 2 में भी स्टेज 3 की तरह इंटरपर्सनल बेस पे नहीं रहती, स्टेज 4 में इट बिकम्स it's you can say it's complementary to the social system. सोशल सिस्टम्स की वजह से हम मोरालिटी, और यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल की इंटरनलाइजेशन ऑफ मॉरल्स होते हैं, जो मॉरल्स हैं वो हमारे इंटरनलाइजेशन की इंटरमीडिएट लेवल की होती है। 11+ ईयर्स में से लेवल 3 स्टार्ट होता है, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, where the morality is fully internalized and social contact are utility and individual rights. अब यहाँ पे हम अब सोसाइटी से भी जरा आगे की बात करते हैं कि सोसाइटी में everyone has a right, has जो वैल्यू सिस्टम है उस वैल्यू सिस्टम बेस्ड है कुछ पे, वो ट्रांसेंडेड है, अंडरग्रेड है, वो प्रिंसिपल हम कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि we have to value the social contract between the men in the state and the men on the guard and men of and on the society, और individual rights की बात करते हैं कि भाई everyone has some basic fundamental rights। और स्टेज 6 which we call universal ethical principles, जहाँ पे हम अपनी सोसाइटी से, रिलीजन से, सबसे वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इज द बेसिक थिंग,